हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बायोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व किए जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंजेस इज लैक्स स्पिक्यूस बट हैज स्केलेटन ऑफ स्पंजिन फाइबर्स। किस में स्पिक्यूल्स नहीं होते हैं बट हैज़ स्केलेटन ऑफ, परंतु स्पिक्यूल्स नहीं होते पर स्केलेटन होता है जो कि स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। स्पॉन्जिया बट नॉट फाइलोस्पॉन्जिया, फाइलोस्पॉन्जिया बट नॉट स्पॉन्जिया, बोथ ए एंड बी। यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिया एंड फाइलोस्पॉन्जिया बिलोंग्स टू क्लास डेमोस्पॉन्जी एंड सब क्लास Keratosa. These are horny sponges, Spongia and Phylospongia, with skeleton of spongin fiber but no sporules. Body form usually rounded and massive with a leathery surface and dark surface. Spongia, also known as bath sponge. Phylospongia is also called leaf sponge. Spongin is an organic, horny, elastic substance resembling with silk in chemical composition. Which of the following sponges has a skeleton of spongin fibers? आंसर है ए एंड सी, कैलिना एंड फाइलोस्पोंजिया। कैलिना इज ए डीप वाटर फॉर्म। कैलिना इज पॉपुलरली नोन एज द मरमेड्स ग्लव्स और डेड मैन्स फिंगर्स because it is shaped like a hand with several fingers perforated with oscula. Calina and Phylospongia, both spongia has a skeleton of spongin fiber, but Calina skeleton consists of spongial with siliceous spicules, and Phylospongia skeleton consists of spongin fiber but no spicules. Of the following, which zoophyte remains associated with Hyloneema? कौन हाइलोनिमा में पाया जाने वाला जूफाइट कौन सा है? पैलिथोआ। पैलिथोआ is related to Hyloneema, which forms a symbiotic relationship with Hyloneema. It is a marine and free-living sponge found at considerable depth around New Zealand coast and America. It is commonly called glass rock sponge. Hyloneema is glass rock sponge. Which of the following types of cells share reserve food in sponges? Thesiocytes. Thesiocytes are the cells store reserve food material in sponges. Zambiel is comprised of thesiocytes surrounded by a collagen and spicule coat. The thesiocytes from freshwater sponges are usually binucleate and are packed with yolk platelets and lipid inclusions along with numerous ribosomes, endoplasmic reticulum, mitochondria, and Golgi body. The yolk platelets provide energy reserve in the form of the basic proteins and glycoproteins. नेक्स्ट, बाथ स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। कमर्शियली यूज स्पॉन्ज, इट इज बिलोंग्स टू क्लास डेमोस्पॉन्जिया फाइलम पोरिफेरा। विच स्पॉन्ज इज डेट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री? क्लियोना। क्लियोना आर members of the family Clionidae. They are efficient excavator of calcareous material, including corals and shells. Cliona has been particularly destructive to pearl oyster because they create holes into the oyster shell to find shelter inside the oyster. Thus, the correct answer is Cliona. Example of phylum Porifera is Cycon. Example of phylum Porifera is Cycon. Which cells are found only in sponge? Coinocytes. Mesohyle is found in Parazoa. The mesohyle, formerly known as the mesenchyme or mesoglia, it is the gelatinous matrix within a sponge. Mesohyle is present in Parazoa. It fills the space between the external panicoderm and internal coinoderm. Mesohyle is found in Porifera. The sponges are placed in the subkingdom Parazoa. The freshwater sponge is Spongilla. Which of the following is not a sponge? Proterospongia is not a sponge. Proterospongia is protozoa, not a sponge. Proterospongia belong to class Mastigophora. It is collecting link between protozoa and porifera. Free living larva of some pathogen, some sponges is known as parenchyma. पेरेंकामुला इज फ्री लिविंग लार्वा ऑफ सम स्पंजेस। वेलिगर प्रेजेंट होता है। इट इज़ नोन बाय सेकंड नेम ग्लोचिडियम लार्वा फाउंड इन द क्लास पैलिसीपोडा ऑफ फाइलम मोलस्का यूनियो। ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है नेरीज में। पेरेंकामुला फ्री लिविंग लार्वा सम स्पंजेस नॉन स्पंजिला, इट इज़ फाउंड इन द स्पंजेस लाइक ल्यूकोसेलेनियम। बाइपिनेरिया प्रेजेंट रहता है स्टारफिश में। टोटीपोटेंशिया
Cells in sponges are arcuocytes. Arcuocytes are the totipotent cell give rise to sex cells. Ova in sperms and play important role is regeneration. Coinocytes oval round shape that make the chamber flagellate. Pinacocytes it is a cell that make non-flagellate. The incurrent canal lined by pinacocyte cells. Trophocyte it is nerve cells. The oocyte move like an amoebocyte and grow by engulfing special nerve cell or trophocytes. In sponges, which one of the following amoebocyte is modified for storing फूड ग्रेन्यूल्स? फूड ग्रेन्यूल्स कौन से कलेक्ट करती है? ट्रोफोसाइट्स. इसमें आंसर है थीसोसाइट. द बॉडी वॉल ऑफ ए कॉमन स्पंज कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर: पिनेकोडर्म, कॉइनोडर्म, mesenchyme. The mesenchyme is found between pinacoderm and coinedoderm. It contains amoebocytes. Amoebocytes are modified in the following types: arcuocytes may be converted into other types of cells and are also called undifferentiated totipotent cells. Myocytes form a circular ring round the osculum and help in closing and opening of the osculum. Thisocytes, those have lobose supodia and are filled with food granules, thus acting as storage cells. Which of the following type of cell store reserve food in sponge? Thisocytes. Types of species found in zammules of spongilla: monoexone. मोनोएक्सोन टाइप के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं स्पॉन्जिला के जैम्यूल्स में. ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन स्पॉन्जिला. स्पॉन्जिला में ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम होता है. इट इज़ फाउंड इन दिस कैनाल सिस्टम मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. इट हैज़ नैरो नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी lined by pinacocyte as we can see in this diagram. Pinacocyte, and it opens to exterior through an excurrent pore called osculum. The term ostia is associated with porifera. इन स्पंजेस प्रोसोपाइल क्या है? प्रोसोपाइल क्या होता है? स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इन करंट कैनाल विद रेडियल कैनाल, उसे प्रोसोपाइल कहते हैं. प्रोसोपाइल इज ए स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट द इनकरेंट कैनाल विद रेडियल कैनाल. द फर्टिलाइजेशन इन स्पंजेस अकर्स इंटरनली इन मीजेनकाइम. मीजेनकाइम में फर्टिलाइजेशन होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन साइकम. The sponges were classified with plants till the discovery of circulation of water through their body. The sponges were classified with plants till the discovery of circulation of water through their body. Which of the following cell type is capable of giving rise to other cell type in sponges? Arcuocytes. Thisocytes are responsible for intracellular digestion along with coinocytes in sponge. So the correct answer is arcuocytes. Which of the following features is universally present in all sponges? Presence of spongocele. Spicules in sponges are formed by scleroblast. Paragastric cavity is another name for spongocele. Flagellated cells in sponges are called coinocytes. The diameter of ostia in sponges is regulated by myocytes. In sponges, the diameter of ostia is regulated by myocytes. Calcarea, aragonite spicules, demosponge, spongin fiber, and siliceous spicules. Sclerosponge, spongin fiber, aragonite, and siliceous spicule. Hexateria, 6 red siliceous spicules. थैंक यू फ्रेंड्स. इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें.